So come on the screen, everyone. So have you all understood about probiotics? अच्छी तरह से, ठीक है? So now this 45 minutes will get over and then we will stop for the day. Okay, you don't need to join back again. ठीक है? Okay, so basic principle कि probiotics क्या है और उसका क्या role है वो समझना जरूरी है. So make sure you are clear about that, everyone. ठीक है? Okay. Then yeah, probiotics में there are names of microorganisms also which I have given. So learn as much as possible. But textbook वाला तो learn करना ही है at any cost. ठीक है? Okay. Now after probiotics, next है some very common substance that is the bread. Correct? इंडिया में अगर मिल्क चलता है तो ब्रेड भी उतने ही ज्यादा चलते हैं. We use it as a layman term also कि I want to earn my bread. है ना? इसका मतलब है कि this is one such food item which is very nutritious and very highly consumed in our country. Correct? तो ब्रेड भी हम लोग खाते हैं regularly, right? And you get it in the market in various different types of brands. इस तरह के slabs में मिलते हैं, right? So bread basically बनता है उसके dough से, okay? And the dough is prepared using an organism called the baker's yeast. Okay, this is available in the form of this kind of granules. Okay, and उसको अगर microscopically study करें तो it is one type of a fungi, unicellular fungi called yeast, Saccharomyces cerevisiae. You have to remember the name. ठीक है? So baker's yeast is Saccharomyces cerevisiae. तो इसके लिए क्या करते हैं? Baker's yeast is added. Okay, dried form में मिलते हैं उसके granules. So that can be made into a small paste like या solution जैसे बना सकते हैं. Mix that with salt, water and other necessary materials and you make the dough. Okay, so if it is a small scale industry then थोड़ा सा इस तरह से बनता है, but if it is a large scale industry then the dough is prepared in large amounts. ठीक है? And then when the Saccharomyces cerevisiae will undergo fermentation, anaerobic respiration, and उसमें बनेगा carbon dioxide. Okay, so for any product like a bread, अब यहाँ पर जब हम bread बोलते हैं तो another thing that we consume is the पाव. महाराष्ट्र में पाव बहुत चलते हैं, है ना? महाराष्ट्र एंड गुजरात है सपोज, पाव बहुत चलते हैं, तो यहाँ पे वड़ा पाव सब खाते हैं तो पाव आते हैं. Correct? So this pav is also prepared using the same method, and in both the cases you know very well वो soft and fluffy होना जरूरी है, and that is possible only when the yeast is added in sufficient amounts and carbon dioxide is released out of it. So अगर उसमें से carbon dioxide gas release होके निकला अच्छे से, then the dough will rise and it will become soft and you will get a soft and fluffy bread. अगर वो fermentation बराबर नहीं हुआ या baker's yeast का quantity plus minus हुआ, so then the dough will not be correct and the bread will not be good. That is a very important characteristic feature of it. The dough should rise because of the CO2. Okay, then the bread becomes spongy and you get all different types of bread. Bread समझा अच्छी तरह से? ठीक है? So in Maharashtra and many parts of the country. Sir, हाँ बोल. yeast algae है ना? Yeast is not algae. Yeast is a unicellular fungus. Actually, ईयर की टेक्स्ट बुक में था कि algae है और वो थैलोफाइटा में बिलोंग करता है. नहीं, algae नहीं है, बिल्कुल नहीं. Because अगर algae होता तो उसके पास photosynthetic pigments होता. It is not there. Okay, it is not an algae. Actually, there is a controversy over two different classifications. एक बोलते हैं कि unicellular fungus है and दूसरा बोलते हैं कि वो protista है. Protista is another kingdom. Fungi is another kingdom. So it is a controversy between both of them. And protista का एक type है fungi like protist. तो ये उसमें place होता है, but algae में बिल्कुल नहीं. Because algae is a plant and it is not categorized under plants. Whenever you talk about plants, as a general rule for all the plants, a characteristic feature ये है कि they should have photosynthetic pigments and they should be able to carry out their own process, photosynthesis.
Yeast cannot do that. ये एक्सेप्शन था, ऐसा था सर लास्ट ईयर में, सर्च करके बताती हूँ। बताना मुझे, but it is not there. Okay, पहले मैं भी because of some controversy consider किया होगा, but it is not a plant, that is for sure. Okay, because इसमें कोई भी फीचर नहीं है जो प्लांट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? ओके, एक और चीज देखो यहाँ पर, Saccharomyces cerevisiae. What is this thing you are seeing? ये एग्जांपल दूसरे लेसन में भी देखा है हमने. Come on the screen everyone. What is this you are seeing? छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये इंडिविजुअल सेल मैं इन द बताऊँ? ऑर्गेनिज्म. एनीवन एल्स? प्राची बता, ये क्या है? यू कैन सी माय कर्सर. recollect another lesson that you have studied, उसका एग्जांपल था. Yes, Prachi. Yes, Pranav, your answer is correct. Prachi, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम एट योर एंड. Others are able to hear me correctly? Okay. Diksha, can you answer this? बडिंग हो रहा है. Correct. It is a type of reproduction very common in yeast. Okay, that is called budding. ठीक है, Prachi, please check your network because others are able to hear me correctly. ठीक है? Okay, so that is a bud which we are able to see here. But understood from the microbiology point of view कि कैसे use करते हैं. Any other product for which we use yeast? It may not be baker's yeast, but we use yeast. दूसरा strain उसका. कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं? एग्जाम्पल बताओ. Yes, Pranav, you are correct. Wine. Very good. Alcoholic products. Okay, ग्रेप जूस में से वाइन बनाने के लिए yeast चाहिए. ठीक है, वेरी गुड आनंदिता, एक्सपीरियंस्ड. कड़वी रहती है बहुत, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती. आई नो, बट वाइन इज वेरी लेस अल्कोहलिक, मतलब इतना बहुत कुछ कड़वी प्रॉब्लम नहीं है. रहती. यस यस, वो एकदम अच्छा खासा पी के टल्ली नहीं हो जाते कोई. देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल. उससे अच्छा जूस ही अच्छा लगता है. यस यस, आई नो, वो फर्मेंटेशन है ना, इसीलिए उसका टेस्ट ऐसा होता है. ओके ओके, नाउ यू आर अवेयर अबाउट विनेगर. विनेगर पता है, राइट? वन ऑफ द products which is commonly used in many food preparations. Okay, vinegar is one. And then soya sauce पता है? सोया सॉस कहाँ पे यूज करते हैं? नूडल्स एंड ऑल. वेरी गुड. एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड अजीनोमोटो, पता है? चाइनीज प्रोडक्ट है. केमिकली इट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट. ये भी मार्केट में मिलता है, बट ये बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए बोलते हैं. ओके, बिकॉज अजीनोमोटो तो बहुत कैंसर होता है ना. कैंसरस है एंड इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ इन एनी वे. ओके, बट फ्लेवर के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज यूज्ड. ओके, सो अजीनोमोटो. अभी विनेगर, सोया सॉस या अजीनोमोटो, ये तीनों कहाँ यूज करते हैं? They are used in presently popular Chinese food dishes. Okay, जिसमें microbial fermentation किया जाता है. Okay, so you have this type of dishes. Okay, जैसे you have the noodles. दीक्षा से देखा ही नहीं है, एकदम वीडियो बंद. Right? And this is, ये क्या है? I hope nobody is fasting today, वरना मुझे बहुत गाली पड़ेगी. Yes, anyone? Okay, this is veg
Hakka noodles, as you know, with its respective gravy, and this is veg Manchurian. ठीक है, तो ये दोनों जो है माइक्रोवेव फर्मेंटेशन में इसमें प्रोडक्ट यूज किया जाते हैं. एंड वाइल कंज्यूमिंग, लाइक उसमें विनेगर तो थोड़ा यूज करते ही हैं फ्राइंग के लिए. एंड वाइल कंज्यूमिंग यू कैन ऐड सोया सॉस आल्सो. के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं अगर हम इसको ऑर्डर करते हैं तो यू द पर्सन गिव्स यू दिस आल्सो अलोंग विद इट, है ना, एंड देन यू कंज्यूम इट. ठीक है, ओके, आगे बढ़ो, क्या देखना है और इसको. ओके, दीक्षा अपने आंख तो नहीं बंद कर सकती है तो वीडियो बंद कर दिया, है ना दीक्षा. या सो विनेगर. सो बेसिकली व्हाट इज विनेगर. ओके, ये मार्केट में मिलता है इजीली. सो केमिकली इट इज अ काइंड ऑफ अ केमिकल. इट इज नथिंग बट 4% एसिटिक एसिड. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जो विनेगर है इट इज नथिंग बट 4% एसिटिक एसिड. व्हाट डू यू मीन बाय 4%? वो क्या इंडिकेट करते हैं? इट इज एसिटिक एसिड. केमिकल उसका फॉर्मूला ये है CH3COOH. बट व्हाट डू यू मीन बाय 4%? Yes. If I want to prepare 4% acetic acid in the laboratory, what I should be doing? I should take pure acetic acid, which is called 100. Water add. Correct. 4% indicates the dilution level. Okay. प्राची, अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. Okay, please check the network at your end. Otherwise, you will get the video anyways later. As far as possible, you are able to see. उसको देख लेना पहले. ठीक है? Understood this? तो 4% acetic acid का मतलब है it is the dilution level. Because acetic acid is a very strong compound. उसको इतना strong तरीके से खाने में यूज करेंगे तो हम लोग एकदम आग बबूले हो जाएंगे. That is why it is in a diluted form it is used. And ये कहाँ क्यों यूज करते हैं? Because it imparts sourness to many food products. Okay, and acetic acid या vinegar is also a very good preservative. So if you make pickles या ketchup, sauce, चटनी, तो उन सब के लिए हम लोग विनेगर यूज करके प्रिजर्व कर सकते हैं along with the oil. So it will help to store the food products for a longer time. That is vinegar. So market में मिल जाता है vinegar. Okay, if you have to prepare any such food products at home. कि कभी कभी घर पे हम लोग पिकल्स बनाते हैं. ओके, जैसे समर का सीजन आता है तो हम लोग कच्चे आम का पिकल बनाते हैं एट होम. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू डू पिकलिंग इज कॉल्ड मैरिनेशन. मैरिनेशन का मतलब है कि द टेस्ट ऑफ दैट वेजिटेबल बाय ऑफ द पिकल व्हिच यू आर मेकिंग, दैट शुड बी इम्पार्टेड इनटू द ग्रेवी. तो उसमें सॉल्ट, ऑयल और विनेगर, ये तीनों का बड़ा रोल है. इज दैट क्लियर? ओके, देन सी दिस. विनेगर के लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल fermentation is done, and here the fermentation will give you ethanol and not lactic acid. Whenever any microorganism does fermentation, either of the two products are produced, या तो ethanol या फिर lactic acid. Okay, for vinegar preparation we don't need lactic acid, वो dairy products के लिए. But for vinegar we require ethanol. This is produced. Okay, and then what is the next step? There are carbon compounds. Okay, like you have fruit juice, maple syrup, या sugar molasses. What do you mean by sugar molasses? Sugar molasses क्या होते हैं? Sugarcane juice. Not exactly the juice, but sugarcane juice extract करने के बाद the dried matter which remains, उसके stem का, that is the molasses. So that can be used to extract the carbon compounds, and उसको yeast से treat करते हैं, so you get the ethanol content out of it. Okay, and then what is the next step? Once you get the ethanol, there are mixtures of bacterial strains added. Again, here you have to remember the names of the
bacterium. So when you are preparing vinegar, सबसे पहला ingredient आता है yeast, by which you get the ethanol. Okay, and then to that fermented ethanol you will add the bacterial strains. You should remember the names, that is Acetobacter and the other one is Glucanobacter. These two are added to the vinegar for further microbial degradation. Okay, because I said degraded fermented products also give its characteristic taste. So ethanol का जब further degradation होगा because of these microbes, then you get a compound called acetic acid. That is your vinegar. Got it? Because ultimately vinegar क्या है chemically? It is acetic acid. तो वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? It starts from carbon compounds like starch and other fruit juices or the sugars that you have, जिसको yeast से treat किया जाता है. When you treat it with yeast, you get first ethanol or ethyl alcohol. That ethanol or the ethyl alcohol is mixed with these bacterial strains, that is Acetobacter as well as Glucanobacter. So further degradation takes place. When that happens, you get acetic acid and the other byproducts. Okay, फिर उसके बाद क्या करना है next? Because it's a mixture of acetic acid with other byproducts, so you have to separate out only the acetic acid part, because that is the pure vinegar. So that is done by a process called rarefaction. Industrial process है जिसमें acetic acid को isolate कर देते हैं. Okay, so once you isolate the acetic acid, then there is a bleaching of the acetic acid carried out, because ये जो acetic acid बन रहा है वो काफी strong है, that directly cannot be used as a vinegar. So the first process that it will undergo is bleaching. It will lose its natural color. So bleaching करते हैं by adding potassium ferrocyanide. Okay, all these names you have to remember. कि bleaching कैसे किया जाता है. That is why I given you like a flow chart, so it will be easy for you to remember. Okay, bleaching of the acetic acid is carried out using potassium ferrocyanide, and that is followed by pasteurization. Okay, पहले microbial degradation से जो acetic acid मिला है, that is a very raw acetic acid in as a component of the mixture. तो mixture में से उसको पहले निकाल के isolate करते हैं, separate कर देते हैं, and then the acetic acid is bleached. When it is bleached using potassium ferrocyanide, you get the colorless acetic acid, which is then pasteurized. And we have already discussed what is pasteurization. Okay, come on the video everyone. Pasteurization करते हैं acetic acid का. When the pasteurization is done, then what is the next step? Very small quantity of sulfur dioxide gas is passed through that acetic acid. तब जाके बनता है vinegar. So it's a long process. तो मार्केट में जो विनेगर मिलता है which we consume, that is produced using these different steps. The first step is what? You select a source, a carbon compound containing source. It can be starch or a fruit juice or any syrup or molasses or anything. A naturally derived material. उसको treat करते हैं yeast के साथ. Okay, so that gives you which compound? Ethanol, yeah, ethyl alcohol. So when that ethanol or the ethyl alcohol is produced, that mixture you're treating with bacterial strains, okay, like Acetobacter or Glucanobacter. So when you're treating with Acetobacter and Glucanobacter with ethanol, further microbial degradation will take place. You will get acetic acid along with other byproducts. You don't require the byproducts. You require only acetic acid. So that acetic acid has to be first separated out. Process को बोलते हैं rarefaction. That pure acetic acid which you get, that is undergoing bleaching. Using what? Potassium ferrocyanide. Bleaching होगा तो उसके बाद pasteurization करेंगे. फिर जो acetic acid बनेगा, that is treated with SO2 gas. उसके अंदर से SO2 gas pass on करते हैं.
So that gives a characteristic flavor and aroma to the acetic acid. That final product which you get is now called as vinegar. So understood the difference between actual acetic acid and vinegar? Because if you go to any chemical laboratory, सर yeah, बोल, tell. सल्फर तो हार्मफुल रहता है ना हेल्थ के लिए, Not exactly. फिर भी Not एसिटिक always. एसिड कैसे पास? Sulfur is one of the nutrients that we require, ना? बहुत सारे amino acids में sulfur होते हैं. In fact, onions contain sulfur compounds. It is not always bad, but obviously anything in excess is always bad, no? So vinegar can be used as a part of preparation, but not in too much amounts. Okay, so इसीलिए this can be used as an edible compound. So this is given, that is why it is given very small quantity of SO2 gas. ये important है. Just to impart that flavor and the aroma to that compound. Because if you go to any chemical laboratory, you will find bottles of acetic acid. But that acetic acid is totally different. ये जो है, this is the edible one. इसका processing किया है with these steps. And the product that you get is vinegar. तो यहाँ पे हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि vinegar is something which is used for food product preparation at homes and they are available in the market, but इसका production के लिए we require microorganisms. That is the part we are highlighting here. Has everyone understood? अच्छी तरह समझा सबको? विनेगर कैसे प्रिपेयर करते हैं? एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ इज विनेगर प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली. So you have to make a note of all these steps. That is very important. And names of microorganisms. That is why right from the beginning I am telling you to list it down so that there is no confusion. Okay? We'll move on to next one. After vinegar, there is soy sauce. Okay? So soy sauce we are just seeing ये soybeans है. Okay? So soy sauce is produced by fermentation of the mixture of flour of wheat or rice and soybean. कि मतलब गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा इसके साथ सोयाबीन को मिक्स करते हैं and that becomes the base which is fermented. And that fermentation is brought about with the help of a fungus called Aspergillus oryzae. ये microscopic fungi है Aspergillus oryzae, as you can see. This Aspergillus oryzae is treated with or added to the flour of wheat or rice and soybean. तो उसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है फर्मेंट होने के बाद, that is the soy sauce. So this example is also given to you because there is a microorganism involved. It is a fungus. Aspergillus oryzae. यहाँ पे जो नाम है oryzae, it indicates oryza. Oryza is the scientific name of rice. इसलिए इस फंगस का नाम है Aspergillus oryzae. राइस का नाम है ओराइजा सटाइवा. तो ये चावल और गेहूं के आटे में, बिकॉज दोनों में स्टार्च होते हैं, wheat and rice both, and soybean also contains starch and proteins. तो उसके मिक्सचर के साथ ट्रीट करके they can bring about fermentation, and the fermented product will give you soy sauce. तो ये एग्जांपल याद रखना. Will you remember? Okay, अच्छी तरह से याद रहेगा. So each one with the proper example. So this lesson, as you can see, इसका बस वही है कि किस तरह से कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म को किस फॉर्म में यूज करते हैं. So for all these food products that we are seeing, it is basically fermentation. So yeast can bring about fermentation, bacteria can bring about fermentation. Okay, this fungi can bring about fermentation. These examples we are seeing here. ठीक है, और भी देखते जाओगे. So this is something which I have directly cut pasted from your textbook. Okay, there is a table given. So अभी बहुत सारे examples है textbook में जिसमें इस तरह का table दिया हुआ है. You have to learn everything. Okay, so here production of beverages. What do you mean by a beverage?
बेवरेज क्या होता है? juices, ओके, एनी ड्रिंक आइदर अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक, उसको बोलते हैं बेवरेज. Okay, so this table gives you an example about different types of beverages which you can prepare. Okay, जैसे last column में देखो, name of the beverage. So you have coffee as one beverage, cocoa drink, chocolate drink आता है ना? Okay, wine and cider. These are alcoholic beverages. तो these examples यहाँ पे microorganism कौन से involved है? That is given in this second column. And these microbes are treated to which natural source to get these products. कि जैसे lactobacillus brevis, that's the name of the bacteria which is treated to Coffea arabica. ये spelling check करो, it is Coffea, Caffea नहीं है, it should be CO. So make the change in your textbook. Okay, it is CO over here, not CA. And this is Coffea arabica, अपना coffee plant. कॉफी के फ्रूट्स होते हैं, उसके सीड्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफी बीन्स. So these are treated with Lactobacillus brevis. Okay, तो फ्रूट्स में से सीड्स को सेपरेट किया जाता है. ये फ्रूट्स हैं, द फ्रूट पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, वी आर यूजिंग द सीड पार्ट, दैट इज द बीन्स. So then you get the coffee. तो अगेन कॉफी के प्रिपरेशन के लिए भी यू रिक्वायर माइक्रोऑर्गेनिज्म. You have to remember the name Lactobacillus brevis. Okay, similarly you have Theobroma cacao. Again यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक है, काकाओ लिख के रखे हैं, there is no काका here, it is a cocoa. It is COCAO, सेकेंड लेटर ए की जगह ओ कर दो. Theobroma cacao, ठीक है, the cocoa plant. ठीक है. So the microorganism used is, there are 4 examples that are given over here: Candida, Hansenula, Pichia and Saccharomyces. These are all unicellular fungi. Not all unicellular, they are fungi. तो इसमें भी कोको के प्लांट देखो, ये उसके फ्रूट एंड सीड्स है, नेचुरल चॉकलेट है. तो इसके अंदर जो सीड्स आते हैं वो फ्रूट से सेपरेट करके, तो सीड्स आर ट्रीटेड विद दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड यू गेट द कोको ड्रिंक. ओके, तो कोको प्लांट्स इंडिया में अगर सबसे ज्यादा देखना हो तो यू हैव टू गो टू केरला. केरला में कोको प्लांटेशंस बहुत है एंड स्पाइस गार्डन्स वगैरह होते हैं, तो दे कल्टिवेट इट ओवर देयर एंड दिस इज अ वेरी गुड वन. आई रिमेंबर इट वाज समवेयर इन 2006 या 7 when I was in my graduation. So हम लोग को कॉलेज की तरफ से स्टडी टूर पे गए थे. It was a 1-week tour to Kerala. So we were taken to all the different spice gardens. We have seen cardamom plants, cinnamon plants, okay, इलायची वगैरह के plants देखे, and we were also shown these cocoa plants. अच्छे खासे trees होते हैं, उसमें से ये fruits लटकते हैं. So the person, the owner of that farm, actually plucked out one cocoa fruit and उसका वहीं पे कट करके पल्प हमें टेस्ट कराया. It was almost like chocolate, a natural chocolate. तो उसको इस तरह से प्रोसेसिंग किया जाता है एंड यू गेट द कोको ड्रिंक. सो नेचुरल फॉर्म में इट इज वेरी गुड ड्रिंक. ठीक है. देन यू हैव ग्रेप्स, वेरी गुड इन शुगर कंटेंट, सुक्रोज, फ्रक्टोज बहुत सारा होता है उसमें. तो दैट इज ट्रीटेड विद ईस्ट. ओके, फर्मेंटेशन होता है, तो यू नो वेरी वेल वाइन इज ऑब्टेन्ड. व्हिच प्लेस इन इंडिया इज फेमस फॉर ग्रेप कल्टीवेशन? नासिक. इट इज नासिक. बहुत सारे ग्रेप्स के वाइन यार्ड्स हैं and that is why there are many wineries also. Wineries का मतलब है where wine preparation is done. Okay, and then similarly apples. Apples are also one of the fruits which is very high in sugar content. Fructose, sucrose, okay, बहुत सारे ऐसे sugars होते हैं इसमें. So that is also treated with this yeast. You get ethanol. ओके, एंड फर्मेंटेशन गिव्स यू इथेनॉल. तो उसका अलग लेवल पे फर्मेंटेशन करेंगे तो यू गेट अ ड्रिंक कॉल्ड सीडर. तो सीडर बनता है एप्पल से, वाइन बनता है ग्रेप से. द सोर्स इज डिफरेंट, दैट इज व्हाई द नेम्स आर डिफरेंट.
ठीक है, this is Saccharomyces cerevisiae. This is a picture taken under electron microscope. Okay, so understood beverage production में microbes कैसे useful है. So here also you have a huge list of microorganisms. So this you have to remember. So Saturday जैसे ही मेरा ये पढ़ा के हो जाएगा ना lesson, so one test I will take that online pattern come, where only the examples of microorganisms I will take a test. Only examples. Okay, and the same type of test I will take even for classification of animals online. Okay, name of the phylum or the group and examples of animals. Okay, जैसे मैं वो टेस्ट बनाऊंगा I will pass on the link. सर Everybody should पहले क्लासिफिकेशन का लो, क्लासिफिकेशन yes का I'll do that. Don't worry. ये वाला बाद में. ये बाद में आएगा because this will take time for you to learn also. पहले learn करो. But classification of animals का मैं करूंगा. So example wise करेंगे ना, तो the more examples you learn, the better it is. ठीक है? Yeah. One more slide we can do for today. Just an introduction to something called microbial enzymes. Okay, time is around 7 minutes are remaining. We can wind up. So just एक introduction दे देता हूँ microbial enzymes. ठीक है? Enzymes क्या होता है basically? What are enzymes? Inside the yeast. ये meaning बताया था ना last time. Correct. Enzymes, literally the word means inside yeast, and Pranav, you are correct, they are biocatalyst. Okay, that means they do not take part in a chemical reaction or a metabolic reaction, but their presence will influence the rate of a reaction. So inside a living cell, there are a lot of chemical reactions that keep taking place. Okay, so those chemical reactions, when they keep taking place inside a living cell, they need to be catalyzed so that the rate of the reaction is good enough for the formation of the products. Okay, and yes, I'm getting a question here. Do they take part? No, they don't take part. They don't combine chemically to any of the substrate reactants. Okay, taking part in the sense they do not chemically combine. Okay, so that is not possible here. As you can see in this representative picture that I have shown, अभी ये जो red में दिखाया ना मैंने, these are the enzyme molecules. Just to show a representation. So enzyme molecule कैसा होता है कि it looks somewhat like this. It has got its own molecular structure, various enzymes, and ये जो ऐसा V-shaped site you can see. This is where the substrate will bind. So enzyme and a substrate is like a lock and a key. कि कोई लॉक के अंदर अगर मैंने की घुसाया तो की उसमें परमानेंटली रख नहीं जाता है ना, but only when you insert the key you will be able to open the lock, and then you can remove your key. Enzyme also functions in the same way. Okay, the substrate just has to bind to the enzyme. So once it binds to the enzyme, then only the enzyme can function and give rise to the products. Once the products are produced, the substrate is removed from the enzyme. That's how it works. So here in this topic, microbial enzymes, it's like ऐसे enzymes तो बहुत सारे sources हैं. Human cells also produce so many enzymes. We have digestive enzymes. Plant cells also produce so many enzymes. Enzymes required for photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism. But यहाँ पे हम लोग focus करेंगे microorganisms पे. कि there are so many microorganisms that produce a large number of enzymes. So when they produce enzymes, many of them are commercially very, very useful for us. हम लोग microorganisms में से उन enzymes को isolate करके store कर सकते हैं, which can be used, which can be even stored in a dried form, powder form. For example, invertase. Invertase enzyme obtained from the yeast. उसको isolate करके dried form में store कर सकते हैं. Amylase can be stored. There are a list of enzymes like. तो इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करके, लाइक माइक्रोबायोलॉजिस्ट विल बी अवेयर कि विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग विच एंजाइम एंड हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस. तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट विल बी एबल टू आइसोलेट और कल्चर दोज माइक्रोऑर्गेनिजम्स
extract the enzymes from their cells and collect it and store it. That is the importance of the enzymes here. So with the help of examples and all, we will see this topic. Okay, so just 3 minutes are remaining. We'll stop here. Last 2 minutes कुछ discussion कर सकते हैं, and then we can continue here from the next one. सर बोलो. जो टेस्ट था लास्ट वाला उसमें डिफरेंशिएट बिटवीन का जो फर्स्ट वाला था नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने थे? दोनों के और क्राइटेरिया. तो ठीक है कि उसका डेफिनेशन और सेकंड का You can write the names of the persons or the people who have put forward that criteria. दोनों में अलग अलग लोगों के नाम है ना. बस उतना ही ना. 2 पॉइंट. इसलिए मैं 2 मार्क के लिए पूछा. हाँ. Okay, and any kind of a distinguish between और examples को नहीं था as a point क्योंकि नहीं consider मैंने कर सकते. उतना ही लिखा है लेकिन मैंने 2 ही पॉइंट लिखा है उसमें. आप जो बोल रहे हो वही लिखा है बट तो वही है. मुझे उसके सिवा कुछ पॉइंट उसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते उसमें. There is nothing else you can do. और एक सेल्यूलर ग्रेड और दूसरा था उसमें Organ भी grade. सेकंड पॉइंट में कौन से फाइलम में Yes. कौन से फाइलम में लिख ऑब्जर्व होता है सकते वही लिखना है. Yes, yes. वही लिखना है. So cellular grade is found in porifera. Organ grade is वो found in the कंसीडर होगा क्या? later phylum. Yes, yes. That will. एग्जांपल ही है ना. It is not kind of an example. वो evolutionary feature हम बता रहे हैं ना. So it cannot be taken as an example. ठीक है. और तीसरे वाले में भी सेकंड पॉइंट वही था कि कौन से फाइलम में. Yes. So that can be taken. No problem. Okay. So I'll be checking the papers as soon as possible, and once again reminding all of you, coming Sunday 11 o'clock in the morning, the test will be animal classification, remaining part of the lesson. Okay, mollusca onwards till the end of the lesson. टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के भी पेपर्स बाकी है चेक करना. हाँ वही, ये दोनों मैं एक साथ करके दे दूंगा. Literally I'm not getting time. Literally बहुत ज्यादा पैक्ड अप हो गया शेड्यूल, कॉलेज का वर्कलोड. ओके, बिकॉज सब ऑनलाइन हो गया ना, तो द वर्क हैज इंक्रीज्ड. टुडे आई वेंट टू द कॉलेज आफ्टर 9 months. आफ्टर 9 months आई वाज आउट ऑफ डोमिसाइल टुडे. तो पूरा नजारा ही मैं भी बदल आज गया. स्कूल गई थी. अरे वाह, तो सब ठीक है वहाँ पे. हॉल टिकट कलेक्ट करने एनटीएस एग्जाम का. हाँ. ओके ओके. बाय द वे, एनी आइडिया अबाउट व्हेन इज योर बोर्ड एग्जाम गोइंग टू बी, इन व्हिच मंथ नेक्स्ट ईयर? कुछ बोला अभी तक स्कूल की तरफ से? May. नहीं बोला है? बिकॉज नॉर्मली मई महीने में होगा ना. हाँ, मैं भी वही सुना, बट नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि फरवरी मार्च में होता है, बट दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी डिलेड. लेट्स सी. ठीक है. एनीवेज द टाइम इज गेटिंग अप, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो यू वी डोंट नीड टू जॉइन बैक अगेन. सैटरडे को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. एंड मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू फिनिश ऑफ द लेसन ऑन सैटरडे. तो रिवाइज करके आओ अच्छे से यहाँ तक, सो दैट वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ठीक है. ओके एवरीवन, सो विल स्टॉप हियर. बाय एवरीवन, गुड नाइट. Okay, bye. बाय. Bye.